Hello students, welcome to AJ Mathematics and Science. So today we will continue with chapter AP 10th standard ICSE board exercise 10C. So in this exercise we will learn how to find the sum of given terms of AP. So here we have to keep in mind two formulae. The first formula is that is SN. ये क्या है SN. Find the sum of n terms n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d. यानी कि n कुछ भी हो सकता है 20 टर्म्स. इफ़ दे आस्क टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स एंड n कितना फिल करना है आप लोगों ने 20, 25 देन 20 और a फर्स्ट टर्म d इज द कॉमन डिफरेंस. एंड वन मोर फॉर्मूला इज देयर टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. n कुछ भी हो सकता है, that is n by 2 a plus l. This formula we will apply when we have last term. जब AP का end हो जाए, जब हमें last term दी हो, then we can apply this formula. So we will start with the first question. Here we have first question. The AP is 8, 3, minus 2 and he asked to find the sum of 22 terms. इसलिए मैंने यहाँ पे n कितना लिखा है 22. Here a is 8 and d is minus 5, means second term minus first term. So we'll apply same formula which we have written above, that is Sn is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1d. Here n is 22. So formula is S22, means sum of 22 terms which are in AP, that is 22 by 2 means n by 2 bracket 2 into a कितना है यहाँ पे 8 प्लस n माइनस 1 यानी कि 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 5. सो 22 माइनस 1 दैट इज 21. तो यहाँ पे बॉड मास लगाएंगे 21 मल्टीप्लाई विद माइनस 5 105. देन विल ओपन द ब्रैकेट 16 माइनस 105 माइनस 89 मल्टीप्लाई, देन वी गेट आंसर माइनस 979. सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स of this AP. So students, please note down this. Now same way we will discuss one more question. Here first I will read the statement. So what is the statement given? Statement is find the first 12 natural number, find the sum of first 12 natural number, each of which is a multiple of 7. यानी कि हमने पहले 12 7 के मल्टीपल नंबर का सम निकालना है. सो द फर्स्ट नंबर विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 7 दैट इज 7, यानी कि 7 का टेबल गिनेंगे. नेक्स्ट इज 14 एंड n मैंने क्यों लिखा है 12 यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स. सो a इज 7, d इज सेकेंड माइनस फर्स्ट. ऑब्वियसली द कॉमन डिफरेंस कितना होगा 7 का. 7 के टेबल में कितना ऐड करने के बाद नेक्स्ट मिलेगा हमें 7. सो कॉमन डिफरेंस इज ऑफ 7. So we have to find the sum of first and 12. So which formula we have to apply? Same formula Sn. n कितना है 12, n by 2 12 by 2 2 into a n minus 1d. So just simplify this and we get the answer. Now students, one more question. This type of question already we have done in the previous videos. We can find the sum of the AP if we don't know the first term and common difference, but two conditions are given. For example, क्या condition दी है? The second term of AP is 14 and third term is 18. Find the sum of 51 terms. सबसे पहले आपने क्या लिखना है? Let the first term is A and the common difference is D. So according to question, second term equal to 14. That already we have done in the previous video. A plus D equal to 14. A plus 2D equal to 18. So these are the two simultaneous equations in A and D. Now we just find the value of A and D. That you people know how to find the value of A and D. The value of D we get 4 and the value of D will put in first equation or second equation, get the value of A. So after putting the value of D we get the value of A10. Now we have to find the sum of 51 terms. Same formula we will apply. N by 2 2 into a n minus 1 into d, and simplify this and we get answer 5610.
सो नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच लाइज बिटवीन 250 to 1000 एंड विच आर मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि वो सारी टर्म्स का हमने सम निकालना है विच लाइज बिटवीन 250 एंड 1000 और मल्टीपल हो किसकी 9 की. सो सबसे पहले आफ्टर 250 द फर्स्ट टर्म विच इज मल्टीपल ऑफ 9 दैट वी हैव टू फाइंड. उसके लिए क्या करेंगे, 250 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 7 बच गया. यानी कि इसको आपने 9 बनाना है. तो 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, 2. वी हैव टू ऐड 2 टू मेक इट 9. यानी कि 250 में हम कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे. सो 250 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 एंड विच इज ग्रेटर देन 250. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वी गेट 252. नेक्स्ट क्या मिलेगी, इसमें 9 ऐड कर देंगे. एंड लास्ट द मल्टीपल ऑफ 9, ये सभी को पता है, द लास्ट इज 999. द 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज 999. सो हेयर वी गेट लास्ट टर्म a एंड d, बट द लास्ट टर्म को यूज करके हम क्या निकालेंगे, n. वी जस्ट फाइंड द n बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी टर्म्स लाइज बिटवीन 250 एंड 1000. तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा. So Tn equal to a plus n minus 1d, that formula already we have discussed in the previous video. Fill the value of a, d and Tn and get the value of n. So n we get 84. It means 250 और 1000 के बीच में the multiple of 9 वाली कितनी terms है, 84. So now we can apply the formula which already we have discussed. That is n by 2 n by 2 into a, n minus 1 into d. Simplify करें and you will get the answer. And one more thing, you can apply direct formula also. S84 n by 2, a कितना है 252 plus l because we know l here 99, n by 2 a plus l. This formula also you can apply direct and you will get the answer. So students, please note down this. Now students, we will do one more question. Here again we have to find the sum of the terms but we don't know the AP, यानी कि हमें A और D नहीं पता. So for that, first of all you have to write that the first term of AP A and the common difference D, and according to question 2 conditions will be given. Here first condition is given T4, यानी कि fourth term equal to 11, यानी कि a plus 3d equal to 11. Second condition थोड़ी सी difficult है, उसने बोला है the 8th term exceed than the twice of 4th by 5, यानी कि 8th term double the 4th से कितनी ज़्यादा है 5. इसलिए मैंने 8th और double the 4 का difference कितना ले लिया 5. Just fill the value of 8th term a plus 7d, a plus 3d, but one thing you have to keep in your mind, minus के आगे वाली टर्म you have to take in bracket because when we multiply with the minus the sign will change and we get equation minus a plus d equal to 5. और simplify करें इसको and get the value of d4 and put the value of d4 in any of the equation and get the value of a. After filling the value of a d we get a minus 1. Then simple same formula we have to apply. Which one? N by 2, 2 into a plus n minus 1 d. So simplify and we get answer 485. Once again student, I just revise the formula. The first formula to find the sum of n terms, that is n by 2, 2a plus n minus 1d, that you have to keep in your mind. If you have last term also, then n by 2a plus l. So this is the most important topic. On the basis of this topic you will get one question in the board exam. So students, please note down the formulae and try to solve the exercise 10C. If any problem, then write in the comment section. Thank you very much.